ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है पिछले 10-15 सालों से, क्योंकि इंडिया वाज आल्सो वेरी अंडर इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, बट इंडियंस खुद इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। एंड आई थिंक वो परिवर्तन जो आया है, that is very good for the country, that is very good for investors, that is good for the economy, that we are able to generate capital internally itself. पहले इंडिया में सिर्फ कंजम्पशन साइकिल और कंजम्पशन थीम पे ही मोस्ट निवेशक फोकस करते थे। अभी आप देखें तो ऑटो इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट साइकिल, एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक फार्मा, तो बहुत सारे सेक्टर हैं जो अच्छा कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स देयर इज गुड रीजन व्हाई अक्रॉस द सेम कैटेगरी स्टाइल आप किसी भी एएमसी का प्रोडक्ट लें, देयर इज good degree of commonality in the funds. And the reason for that is simply that all of us have a similar benchmark. I think usme there are two aspects. One is if the stock has not done well up to our expectations, but that for us is less of a worry. Thanks to our investors have a very long-term time horizon of investment. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है मिस्टर आशीष गुप्ता, जो एक्सिस एएमसी के सीआईओ हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सिंस मार्च 2023। He is responsible for developing, communicating, and driving the investment strategy across all product segments of the fund house. Mr. Ashish Gupta has a rich experience of 25 years across varied industries. His last stint was Credit Suisse as the head of India Equity Research, where he actively tracked the banking sector in 13 Asian economies. He has a strong understanding of global and regional macroeconomics and began his professional journey with IDBI. Mr. Ashish Gupta was one of the earliest to identify the asset quality cycle in Indian banks in 2011 and authored several marquee reports, including the House of Debt series. Additionally, he is an independent director for Small Industries Development Bank of India, an appointed member of IRDAI's Consultative Committee on Investments, and also the chair of India Philanthropy Committee of Credit Suisse. Mr. Ashish Gupta holds a master's degree in management from Mumbai University and is also a qualified CFA. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again this particular week. तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर है. He is coming on MF की बात for the first time. आज हमारे साथ है Mr. Ashish Gupta, who is the CIO of Axis Mutual Fund. Hello Ashish, and thank you so much for joining us in this particular episode. Yeah. Hello Namrata, thank you for inviting me. थैंक यू सो मच आशीष। तो आशीष, मेरा आज ऑब्वियसली हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन अप किए हैं एंड हम आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं और उनकी तरफ से ही काफ़ी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम देखें तो पहले जो है FIIs का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता था टू एक्विटीज़ इन इंडिया, लेकिन अभी अगर हम एम्फी डेटा की बात करें तो दैट क्लियरली शोज कि जो एक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उनका 88% ऑफ देयर एसेट्स जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स या HNIs की तरफ से आ रहे हैं। तो आपके ओपिनियन में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, एंड क्या आपको लगता है कि SIPs एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन दिस होल जर्नी? आई थिंक नम्रता, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक इक्विटी मार्केट बहुत सालों से आम आदमी के लिए एक स्पेकुलेटिव एरिया माना गया है। आई थिंक पिछले 10-15 साल में वो भावना में परिवर्तन आया है। आई थिंक अब लोग इक्विटी मार्केट को निवेश की तरह देखते हैं, लॉन्ग टर्म निवेश की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कि इक्विटी मार्केट ऐसा जरिया है जिसके थ्रू वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लंबे टाइम तक खेल सके। आई थिंक किसी भी निवेशक के लिए
सबसे जरूरी है कि वो लंबे समय के लिए निवेश करे, राइट। आपको पता ही है कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन इज ओनली 28 years। तो इस तरह की कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जिसका टाइम होराइजन मैक्सिमम हो। और आपको कोई भी फाइनेंशियल थ्योरी की बुक में ये देखेंगे तो सबसे लंबा टाइम होराइजन इक्विटी का होता है। अगर आप बैंक डिपॉजिट्स देखें तो कोई 6 महीने के होते हैं, कोई 1 साल के, 3 साल के लिए। अगर आप बॉन्ड्स देखें वो 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होते हैं। इक्विटी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका सबसे ज्यादा टाइम होराइजन है, बिकॉज इट इज परपेचुअल, राइट। Yeah. तो इसलिए आई थिंक इक्विटी निवेशकों के लिए, यंग निवेशकों के लिए एक की इंस्ट्रूमेंट है अपनी फाइनेंशियल नीड्स मीट करने का। अभी हमको ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है पिछले 10-15 सालों से, क्योंकि इंडिया वाज आल्सो वेरी अंडर इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। सो Yeah. फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, बट इंडियंस खुद इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। एंड Hmm. आई थिंक वो परिवर्तन जो आया है, that is very good for the country, that is very good for investors, that is good for the economy, that we are able to generate capital internally itself. And it's good both for the progress of the country as well as for the investors being able to participate in the growth opportunity. आपने ये बोला कि एसआईपी एक की चैनल है इन्वेस्टमेंट का। एंड Hmm. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी ट्रू। अगर आप देखें इस साल जनवरी में देर आर अबाउट 8 crore people who invest in SIPs. Hmm. Even just 1 year ago, this number was less than 4 crores, right? Yeah. So clearly, this is the instrument of choice, and why it is become so popular is इसमें इन्वेस्टर मार्केट टाइमिंग पे फोकस नहीं कर रहा है, राइट। Hmm. पहले यही होता था कि क्या मार्केट अगले 6 महीने बढ़ेगी, क्या मार्केट में अभी गिराव है तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक थ्रू SIP पीपल आर एबल टू कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट इन द मार्केट। बाजार के उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और बट इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट एक स्टेडी पेस पे आते रहता है, तो मार्केट टाइमिंग no longer becomes important. And I think that gives a much better overall investment experience for Yeah. anyone. Yeah. And I also think क्योंकि आजकल अवेयरनेस भी इतनी बढ़ रही है towards investing in equities, I'm sure that is also contributing to this whole process. Absolutely. एंड अवेयरनेस बढ़ रही है, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग बढ़ रही है। आई थिंक जैसे आप लोगों की अपनी एप्स हैं, वहाँ पे एक क्लिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, केवाईसी प्रोसेस स्मूथ हो गया है। एंड तो आई थिंक देयर आर सेवरल रेगुलेटरी चेंजेस आल्सो दैट हैव हेल्प्ड make the market more accessible. These have also reduced the volatility and given more confidence to people to invest in. Sure. Wonderful. ओके। सो आशीष, जब भी नया साल शुरू होता है, ये एंटिसिपेशन हमेशा रहता है कि मार्केट्स किस दिशा में जाने वाली है, कौन से सेक्टर्स अच्छा करने वाले हैं। दीज क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। Yeah. आई थिंक हम सबको ये तो ज़रूर समझ में आता है कि हर जो सेक्टर्स होते हैं वो इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल्स के हिसाब से मूव होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम हम किस इकोनॉमिक साइकिल में है? डू यू थिंक हम अभी भी ग्रो स्लोइंग डाउन है, या फिर वी आर एक्सपेक्टेड टू एंटर द रिकवरी फेज सून? और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा करेंगे इन 2024? तो नम्रता, मेरा मानना है कि हम एक इकोनॉमिक अपसाइकिल में हैं। वी आर प्रोबेबली couple of years into the upcycle, and हम्म। typically these upcycle last 5 to 7 years. Uh, ओके। we saw a much more challenging phase in the economy from 2012-13 to 18-19,
And then, just as the economy was about to come out of that challenging phase, we had COVID. So we again had 18 to 24 months of slowdown. And now we are decisively coming out of that. I think what is quite remarkable is that इस रिकवरी में एक दो नहीं बट मल्टीपल सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं. आई थिंक अगर हम मार्केट देखें तो मार्केट में 2012 से 20-21 के बीच में जितने भी रिटर्न जनरेट हुए थे वो तकरीबन तकरीबन दो तीन सेक्टर में ही हुए थे. बहुत लिमिटेड कंपनियों में 20-25 कंपनियों में ही हुए थे. बट अगर आप आज की मार्केट देखें तो मार्केट बहुत ब्रॉड बेस्ड है. मल्टीपल सेक्टर और मल्टीपल कंपनीज अच्छा कर रही हैं. पहले इंडिया में सिर्फ कंजम्पशन साइकिल और कंजम्पशन थीम पे ही मोस्ट निवेशक फोकस करते थे. अभी आप देखें तो ऑटो इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट साइकिल, एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक फार्मा, तो बहुत सारे सेक्टर हैं जो अच्छा कर रहे हैं और उनकी अर्निंग्स एक्चुअली पिछले 2 सालों में काफी बढ़ी हैं. एंड आई थिंक मार्केट में भी जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी अर्निंग्स ग्रोथ के कारण आ रहा है. तो अगर हम देखें मार्केट लास्ट ईयर तकरीबन 20-22% ऊपर था. मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस और भी ज़्यादा 45-50% 2023 में बढ़े थे. बट कंफर्ट ये है कि बहुत सारी जो कंपनियों में प्राइसेस में इंक्रीज हुई उनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी उसके डायरेक्टली को रिलेटेड थी. तो मार्केट की अर्निंग्स भी लास्ट ईयर 20% के ऊपर इंक्रीज हुई थी. इस थर्ड क्वार्टर में भी कंपनियों की अर्निंग तकरीबन 25% से बढ़ी है. तो इसलिए ओवरऑल मार्केट में हमें 2024 में भी कॉन्फिडेंस है कि 2023 भी एक स्ट्रॉन्ग ईयर था तो 2024 में भी क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ कंपनीज की अच्छी है तो इस साल भी मार्केट के लिए अच्छा होना चाहिए. Okay. But can you also help our viewers understand कि अगर उनको sectoral investing करनी है तो how should they structure it? I mean, I think you all understand कि किसी एक sector में अगर हम फिर भी डालेंगे तो शायद risk काफी ज़्यादा ही रहता है, right? So, So can you talk? yes, I think investors के लिए it is important that they follow diversification. And in fact, also a lot of time I get asked the question these days that small and mid caps have done very well. Should we look at large caps, etc.? So I think people should look to invest अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो आप के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड भी होने चाहिए, लार्ज कैप फंड भी होने चाहिए, या आप देयर आर व्हाट वी कॉल गो एनीवेयर फंड्स. सो फंड्स व्हिच कैन इन्वेस्ट अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड हो गए या मल्टी कैप फंड हो गए. So that also provides good experience to the investors because then the portfolio can be repositioned based on किस सेगमेंट में ग्रोथ ज्यादा है, किस सेगमेंट में वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ गए हैं. इट्स इंटरेस्टिंग कि आप ये बोल रहे हैं कि हमें मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. Though my next question is actually around large cap funds. So Sure. let me ask you this very simple thing, कि Yes. आपके ओपिनियन में जो लार्ज कैप्स होते हैं, do they look more attractive compared to mid cap and small caps? क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए कितना ज़रूरी होता है कि वो लार्ज कैप फंड्स में फोकस करें, क्योंकि एफपीआई का जो फ्लो आता है इंडिया में वो जनरली लार्ज कैप स्पेस में रहता है. एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड फ्रॉम अ वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू कि वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत डिस्कशन होता है. तो आप ये बताइए कि क्या लार्ज कैप्स का वैल्यूएशन कैसा है अभी कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स? So I think again very pertinent point. I think large cap का valuations compared to mid and small cap is much more attractive today. So today large cap funds are or stocks are trading at average multiple of about 20 times.
Mid and small caps are trading about 26, 27 times multiple. Typically, the gap on these is not so high. So Yeah. the gap between mid cap and large cap valuation is actually two standard deviations higher than what it is normally. So two standard deviation means that 95% of the time the gap between mid cap and large cap is actually smaller than what it is today. Right. Yeah. So in that sense, large cap looks a better value proposition today. Having said that, I think क्योंकि हम जिस तरह की इकोनॉमी में ग्रोथ देख रहे हैं, जिन सेक्टर्स में ग्रोथ देख रहे हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ एटलीस्ट अगले 12 महीने में लार्ज कैप से ज्यादा आएगी. अगर हम लार्ज कैप कंपनियां देखें, सो काफी सारी मार्केट कैप इसमें आईटी सर्विस कंपनीज में है, बैंक्स में है, कंज्यूमर कंपनीज में है, लार्ज कंज्यूमर कंपनीज. और वहां पे नियर टर्म में ग्रोथ इज गोइंग टू बी मॉडेस्ट. बैंक्स के मार्जिन्स हिस्टोरिक हाई पे हैं. इस साल वो थोड़े कम होंगे. सिमिलरली आईटी सर्विसेज कंपनी आपने देखा ही होगा, पिछले तिमाही में भी उन्होंने अपने टोटल एम्प्लॉयज कम ही किए थे. सो वैल्यूएशंस तो अच्छे हैं, बट ग्रोथ यहाँ पे जो मिड कैप है और स्मॉल कैप है उससे कम होगा. तो तो वैल्यूएशन कंफर्ट के बावजूद आई विल नॉट से कि यू शुड ओनली इन्वेस्ट इन लार्ज कैप्स. I Sure. think you should look for opportunities across market caps. Okay, sure. Okay. So Ashish, as a mutual fund investor, I've been an investor for over 20 years now. I think diversification obviously हमें mutual funds देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि within mutual funds भी हमें diversify करना चाहिए across multiple funds, right? Yes, अब इस पूरे प्रोसेस में मान लीजिए हमने ऐसे दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स पिक करी विद इन द सेम कैटेगरी, तो ओवरलैप हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो. सो yes, प्लीज हेल्प आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड कि ये पोर्टफोलियो ओवरलैप होता क्या है इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम, बिकॉज आई हैव सीन मेनी इन्वेस्टर्स जो एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, अलग अलग एएमसीज के. एंड ऑल्सो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा हो रहा है? सो शुड आई एज एन इन्वेस्टर रियली बी कंसर्न्ड, क्योंकि मुझे जो है पोर्टफोलियो सिर्फ महीने के अंत में दिख रहा है, राइट, नॉट व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द मंथ. sure. सो So I think, frankly, सेबी के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंट है. सो आई थिंक आपको सिर्फ महीने के एंड में पोर्टफोलियो दिख रहा है, बट given the size of our funds or most of the funds in the industry, during the months, the portfolio does not meaningfully change, right? So the average what we hold during the month is almost the same जो आपको end of the month दिख रहा है. But of course, there is good reason why across the same category style, आप किसी भी AMC का प्रोडक्ट लें, there is good degree of commonality in the funds. And the reason for that is simply that all of us have a similar benchmark, right? So अगर हम large cap fund लें या mid cap fund लें, तो हमारा benchmark same होता है. तो और हमें बेंचमार्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना पड़ता है. हम लोग ऑब्वियसली एग्जैक्टली बेंचमार्क पे नहीं होते, बट बेंचमार्क के आसपास होते हैं. तो टिपिकली अगर आप सेम कैटेगरी का फंड लेंगे, इवन विद डिफरेंट एएमसीज, सो 40-45% कॉमनैलिटी फंड में पाए होगी, राइट? अगर आप मोर डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज, स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो आर एनीवेयर बिटवीन 90 to 150, then there is lot more diversity across funds within AMCs. But अगर आप specifically लार्ज कैप कैटेगरी में करेंगे, तो अक्रॉस फंड हाउसेज यू विल फाइंड एटलीस्ट 40-45% कॉमनैलिटी. And the only issue for the investor then is that there is a high degree of correlation in the returns.
आई गेस वो कॉमनैलिटी इसलिए भी लार्ज कैप में ज्यादा होती है क्योंकि यूनिवर्स इज 100 स्टॉक्स। अब मिड Yes, कैप में यूनिवर्स आपका 150 स्टॉक्स का है, स्मॉल कैप में yes, 250 स्टॉक्स का है, तो absolutely, ऑब्वियसली चॉइसेस ज्यादा हैं फॉर अ फंड absolutely. मैनेजर। सो आशीष, अब मैं आपसे थोड़ा मिड कैप फंड्स के बारे में बात करना चाहूंगी। अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें, मिड कैप फंड्स में भी हमने देखा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा एलोकेशन रहता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि अभी देखा जाए तो मिड कैप स्टॉक्स ने काफी अच्छा ही किया है रिसेंटली। Yes. So what's your take on this? सो इसके नम्रता दो तीन रीजन है। एक तो कई कंपनियां होती हैं जो हम तब खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो में जब वो मिड कैप होती हैं। Yes. एंड अगर कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं तो वो लार्ज कैप में टर्न हो जाती हैं, राइट। एंड और अगर हमारा मानना है कि उनका आउटलुक अभी भी अच्छा है, कंपनी अभी भी फास्ट पेस पे ग्रो करेगी, उसके वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो वी कंटिन्यू टू होल्ड देम, राइट। सो वन ऑफ द रीजन इज जो हमारे मिड कैप थे वही लार्ज कैप बन गए। Another reason is what you referred to earlier, that large cap में हमको valuation is looking good, right? So कहीं sectors में we want to make sure that we are capturing the best value and growth proposition. So we have flexibility whether we look at mid cap or large cap. The third reason also is to maintain a good amount of liquidity in the portfolio. So इंडियन मार्केट में वाइल कंपनी की मार्केट कैप्स काफ़ी बड़ी हैं, हर कंपनी के ट्रेडिंग वॉल्यूम इतने नहीं बड़े हैं। वी वांट टू मेक श्योर दैट we continue to have very high degree of liquidity in our portfolios, and therefore we may also allocate to large cap. सो आशीष, लेट मी आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे पास जितने फंड मैनेजर्स आते हैं, सीआईओज आते हैं, उनसे हम ये सवाल डेफिनेटली पूछते हैं। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड एज एक्सिस एएमसी, आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक पिकिंग कैसे करते हैं? एंड ऑल्सो व्हाट डू यू डू जब आपने फॉर सम ऑफ योर इक्विटी फंड्स which have not really risen to their true potential for some time, then what's the strategy that you follow? Sure. So हमारे स्टॉक सिलेक्शन के प्राइमरली दो माध्यम है। One is a top down approach, Okay. and the second is bottom up, specific stock ideas, company ideas. What we mean by top down is we look at what is the macro conditions like, हमारा इकोनॉमी पे, ग्लोबल एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी पे क्या व्यू है, कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे, जीडीपी ग्रोथ होगा तो वो कहाँ से कंट्रीब्यूट होगा, वो कंजम्पशन से आएगा, इन्वेस्टमेंट से आएगा, एक्सपोर्ट से आएगा। एंड ऑन दैट बेसिस जहाँ पे हमको बेटर प्रोस्पेक्ट लगते हैं, हम उस सेक्टर में, उस थीम में कंपनियों की तलाश करते हैं। The other, of course, is we have a fairly good team of research analysts. We have about 50 research analysts जो ऑलमोस्ट 20-22 सेक्टर कवर करते हैं, इन सेक्टर की कंपनियों से लगातार मिलते रहते हैं, और वहाँ से उनको जो अच्छे आइडिया आते हैं तो वो हमारे सामने उन पे काम करके डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस से स्टॉक की सिलेक्शन होती है और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है। ऑफ कोर्स you are right, it is not always that we get our desired results. Yes. I think usme there are two aspects. One is that if the stock has not done well up to our expectations, uh, uh, but that for us is less of a worry. क्योंकि हम थैंक्स टू आवर इन्वेस्टर्स have a very long term time horizon of investment, Sure. and I think we can be patient about the stock price reflecting the fundamentals of the company. I think the other challenge sometimes we face is that when company does not perform as per our expectations or market expectations,
right? Mhm. And that is when we kind of re-evaluate whether it is temporary, whether there is something incorrect in our investment thesis. And if that is the case, then the changes we need to make. Okay. Since we are talking about your stock picking strategy, let me ask you another fundamental question. हमने देखा है कि Axis AMC, हमेशा एक growth style strategy follow करती थी. Yes. But now we see that, shift happening where we see more diversity in the equity portfolios. So Yes. could you please tell us something about this approach? So can we Sure. say कि अभी blended strategy between growth and value है या ये more value towards, tilted towards value है? What do you say? No, I think we will continue to be very focused on growth and quality growth as a strategy, as an investment philosophy. The diversity that you are seeing increase in our portfolio is an outcome of जो हमारी पहले बात हुई थी कि अब हमें इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रोथ दिख रही है। Yes. सो पहले सिर्फ कंजम्पशन में ग्रोथ थी तो हमारे पोर्टफोलियो बहुत कंजम्पशन को फोकस थे। अगर आप देखें अभी ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हो रही है, रियल एस्टेट कंपनीज में है, होटल्स में है, एयरलाइंस में है। तो ये सब कंपनियां भी हमारे पोर्टफोलियो में आपको मिलेंगी। पहले ग्रोथ सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में थी, अभी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भी ग्रोथ है, उनके कैश फ्लो जनरेशन भी स्ट्रांग है। Yes. पहले हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक होते थे, बट अगर आप देखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अब लोन्स और डिपॉजिट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अर्निंग्स ग्रो कर रहे हैं at a rate as good as private sector. Their ROEs are good. So that is what is reflecting in our portfolio. So I don't think there is a change so much in our investment style that is showing in the portfolio, but what is the change that has happened in the economy and the companies. Okay, sure. Wonderful. Okay, so Ashish, now let me ask you this question around international investing, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड आई थिंक वन रीज़न कि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, या फिर जो हम Yes. कंट्री स्पेसिफिक रिस्क बोलते हैं। तो व्हाट आर द की एडवांटेजेस, लाइक अगर मुझे एक इंटरनेशनल फंड में मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो बेनिफिट्स क्या है वर्सेस द रिस्क that I'm taking, क्योंकि लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे कि इंटरनेशनल फंड्स का क्या उनका डोमेस्टिक एक्विटीज के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है इन जनरल? Yeah. So I think the main reason for investing in international fund that people look to do is diversification, right? कि you are not totally uh, 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 prone to what happens in one economy, right? And that's why people have started to think about having some international equities in their portfolio. मेरा मानना है कि गिवन इंडिया की growth opportunity, what is the visibility for next multiple years of growth, I don't think that should be the reason for us to choose international funds. But there are still reasons why you should invest in international fund, which is more to get exposure to themes or technologies that is not available or investable in India, right? Okay. Whether you talk about digital technologies, now you talk about artificial intelligence, you talk about biotechnology. So what is available through some of that through international funds or stocks is not something that any of our large, mid, or small cap funds can do, and therefore to participate in that opportunity is something that you can consider. The other, of course, is that from a pure diversification reason, uh, even currency diversification, you would want to have certain exposure to international assets. And there you can actually do it even not just through international stocks, but you can do even through gold, because in many ways gold is a proxy to the dollar as well for a lot of Indians.
or you can even invest through a US Treasury fund. So we have a product which basically is a fund of fund investing in a US Treasury. So you are Mhm. actually just buying US government bonds through that. Hmm. So that also is like a dollar exposure, which today, as you know, a 10-year US bond is giving a 4.3% yield, which in dollar terms is also attractive. So there are multiple reasons for investing in international assets, but I think the most compelling ones are currency diversification and tapping into technologies or opportunities that are not available in India. लेकिन अगर हम रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से बात करें ना आशीष, तो इंटरनेशनल फंड्स ने पिछले 3 सालों में एवरेज रिटर्न जो दिया है दैट्स अबाउट 2.3%. तो Yes. फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो मे बी नॉट सो लुक्रेटिव. तो इज इट डज इट स्टिल मेक सेंस फॉर एन इन्वेस्टर? I think so. I think, but you have to be careful what kind of international fund you select, right? So I'm sure if someone had invested in Nasdaq, then his experience would have been very different from this 3%. ऑलराइट. ओके. फेयर इनफ. अब थोड़ा ना एक और वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी फेमस कैटेगरी एज वेल, विच इज़ द बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, या फिर वी कैन ऑल्सो लुक एट से अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स. सो लेट्स Yes, टॉक अबाउट द हाइब्रिड कैटेगरी इन जनरल. yes, आइडियली एज एन इन्वेस्टर मुझे डाउनसाइड रिस्क थोड़ा कम करना है. आई वांट टू प्रोटेक्ट माय डाउनसाइड रिस्क. तो ये जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, ये कैसे हमारे डाउनसाइड रिस्क को कम करने में मदद कर सकते हैं? एंड जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन इन इस कैटेगरी में? या फिर जो रिटायर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रेगुलर इनकम देख रहे हैं, क्या वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन अ कैटेगरी लाइक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स? yeah. So again, हाइब्रिड फंड्स में दो तीन कैटेगरीज होती हैं. जैसा आपने बोला, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जहाँ 65% इज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज. दे आर मोर कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्ट्रेटजीज जहाँ पे ओनली 40% इज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज, बैलेंस इज इन डेट और अदर एसेट्स. Uh, or there are the dynamic funds where, depending on where we are in the market cycle and where the fund manager conviction is, equity or debt की allocation बदल सकती है. या. I think for first time investors as well as more seasoned investors, I think this is an important asset category by itself. So, not just for first time investors. I think this is a very efficient way of investing into debt as well, because as you know, debt investments, if you do on your own and if you switch between equity to debt, your taxation incidence is very high. So if you invest through this kind of strategy, then and again that's where the real appeal of dynamic fund is, that based on the market cycle, your equity and debt allocation can keep changing without needing for you to have a tax incidence every time the reallocation is done. Yes. So I think for that reason, people, in my view, for the long term, across investor category, first time investor, seasoned investor, should definitely look at uh, uh, a hybrid fund, and my favorite one is a dynamic strategy. Okay. Okay, so now just one more category of funds that I'm going to ask you about, which is the index funds. Yes, Index funds भी काफी फेमस है, and of course ऐसे investors जिनको लगता है कि active funds में invest नहीं कर रहे हैं, तो passive funds are a good way to start your investment journey into sure. mutual funds. तो index funds में भी बहुत सारे categories रहते हैं. Yes. तो help us understand कि अगर मुझे index fund से अपना investment शुरू करना है, तो मैं कौन सी category को pick करूँ within index funds? So I think really for new investors, large cap category is probably the best. I think Okay. that most times has relatively lower volatility also. More importantly, why a index fund is recommended for new investors
is that they can actually really follow the investment trajectory. So they don't even need to look at their monthly statement every month, right? क्योंकि Mhm. दे नो कि मार्केट कैसा कर रहा है, उस निफ्टी हिसाब से। सेंसेक्स की, एंड उनके फंड के रिटर्न विल बी वेरी क्लोज टू दैट, राइट? करेक्ट। सो इट इज वेरी easy to understand the return you are getting, the experience you are getting, right? Many times in active funds, there can be positive alpha, negative alpha, and so for investors who are not tracking it so easily, and who maybe just see their portfolio once in a while, there might be surprises, right? So with an index fund, that surprise element goes away. Although I think if you see the track record in India of active managers as of now, over the last whatever 5, 10, 15-year period across fund categories, uh, as of now in India at least, active funds have done better than the passive fund. But clearly passive funds do have a value. They make it kind of much more simpler to invest, follow, or track your investment outcomes. ओके, ओके। आशीष, अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ये बताइए कि बेसिक थंब रूल्स उनको क्या फॉलो करने चाहिए व्हाइल दे आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स? तो बेसिकली डूज़ एंड डोंट्स के तरीके से आप हमें बता सकते हैं। I think most important is that you should look at time you are investing in for, right? ओके। And your fund selection, your selection of style should first focus on what are you investing for. हुँ, If you plan your investment based on your goals, you look at investment solution based on your needs, then you will be able to structure the investment most appropriately, right? ओके, And जैसा कि हमने बात करी, there are index fund, there are hybrid fund, there are equity fund, there are large cap, small cap, mid cap. So all products have a different sort of time frame in terms of investment horizons for which they are ideal. श्योर। The second thing is that the longer you stay invested, the probability that you will make a better return goes up, right? So there are some statistics you may have read that in only for the last 25 years, in only about 55% of the years, equity funds have outperformed debt funds on 1 year returns basis, right? But if your investment is 5, 6 years investment horizon, if you stay invested for 5, 6 years, it is very rare, actually never in India, that your returns have not beaten that, right? So I think the longer you stay invested, your expected return keeps going up, right? So the time you invest for is important. I think there is always this tendency that I've made good return over last 3 months. Let me sit out 1 month and I'll come back after 6 months. As we talked about the beauty of SIPs, that it is very difficult to time the market. Even if you, let's say, exit the market at the top, it's very rare that you will enter the market back at the bottom, right? So if you stay invested, your probability of enhancing your return actually goes up rather than comes down. ओके। सो बेसिकली इन्वेस्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज, और अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग टाइम होराइजंस रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड से एस आई पीज, दीज वुड बी द Yes, थ्री yes. लर्निंग्स यू वुड वांट। ओके। एंड जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन आशीष, आप खुद इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो हेल्प अस अंडरस्टैंड ऐसी क्या गलतियां आपने करी हैं जो जिससे हम सीख सकते हैं, and शायद वो गलतियां ना रिपीट करें। Yeah.
So I think one, as I said earlier, is stay invested. I think a lot of time what happens is that uh, um, actually most of us don't pull out our investments when they are loss making. We actually tend to pull out our investments when they are doing well, Yeah. and particularly for stocks, that is works. And I have multiple stories where I sold stocks much early, Okay. and in hindsight, if I had stayed the course with that stock, the return would have not been something, not even something I could have imagined, right? So I think selling too early is been the biggest mistake. Okay. So maybe selling too early or holding on to something for too long. Okay. Sure. Wonderful. Thank you so much, Ashish. We are done with all the questions for you. Okay, Thank you so much for joining us today. And I do hope हमारे viewers को आज आपके इस episode से बहुत सारी learnings मिली हो. So thank you so much for your time, and we hope to get you back on this episode soon. okay. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Ashish. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा, and I do hope you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने points discuss किए वो मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर आशीष से ये डिस्कस किया कि क्या लार्ज कैप स्पेस अभी मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्टिव है. तो मिस्टर आशीष सेज कि डेफिनेटली अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो लार्ज कैप्स के वैल्यूएशन अभी काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट. लेकिन अगर हम अगले 12 महीने की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है. तो अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट देख रहे हैं तो लार्ज कैप सेगमेंट है. लेकिन अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखनी है देन यू कुड लुक एट मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट. फिर हमने मिस्टर आशीष से ये डिस्कस किया कि एक्सिस एएमसी हैज शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग अ स्टॉन्च ग्रोथ स्टाइल टू डाइवर्सिफाइंग इन अक्रॉस इक्विटी पोर्टफोलियोज. तो मिस्टर आशीष सेज कि अभी भी जो है क्वालिटी और ग्रोथ पे फोकस है, लेकिन एज एक्सिस एएमसी जो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी सारे सेक्टर्स काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं. So they're trying to tap into all the sectors plus the overall growth in the Indian economy. फिर हमने मिस्टर आशीष से ये पूछा कि इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट या एडवांटेजेस क्या होते हैं. तो मिस्टर आशीष सेज कि अगर एज एन इन्वेस्टर आपको अक्रॉस कंट्रीज या इकोनॉमीज डाइवर्सिफाई करना है तब आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ही ऑल्सो सेज ऐसी बहुत सारी थीम्स जैसे कि एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेशनल फंड्स, और आपको जो है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन लाइक डॉलर एक्सपोजर का भी बेनिफिट मिलता है. फिर हमने मिस्टर आशीष से ये पूछा कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने ज़रूरी होते हैं. तो मिस्टर आशीष सेज कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो बहुत आसानी से जो है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इफेक्टिवली इंडेक्स फंड्स जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं. ये समझने के लिए भी बहुत आसान होते हैं और इनमें रीबैलेंसिंग का भी उतना हेडेक नहीं रहता है. और ये जो इंडेक्स फंड्स होते हैं इनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट आउटकम्स को बहुत आसानी से ट्रैक और फॉलो भी कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर आशीष से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम स्टॉक मार्केट, एंड ही सेज कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए तभी पैसा निकालना नहीं चाहिए. ही सेज कि कभी बहुत जल्दी नहीं बेचना चाहिए और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए. So that was about it in this particular episode. I do hope you guys like this video. Please do like it, share it with everyone, and do subscribe to the Groww Mutual Fund channel. And I'll see you next week. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.